अलंकरण समारोह व रुस्तमजी स्मृति व्याख्यान के मुख्य अतिथि और भारत गणराज्य के माननीय उपराष्ट्रपति श्रीयुत जगदीप धनखड़ जी हमारे बीच पधारते हुए हम महोदय का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और अब समय है राष्ट्रगान का, तो आइए अब राष्ट्रगान में शामिल हों। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सर्वविदित है कि सीमा सुरक्षा बल एक बहुआयामी बल है, जिसे आज हम सभी दुनिया के सबसे बड़े बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के रूप में भी जानते हैं। और आज हम सभी इस बल के अलंकरण समारोह और सीमा सुरक्षा बल के संस्थापक महानिदेशक स्वर्गीय श्री के रुस्तमजी स्मृति व्याख्यान के अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। इस विशिष्ट समारोह में भारत गणराज्य के माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय श्रीयुत जगदीप धनखड़ जी को आज मुख्य अतिथि के रूप में अपने बीच पाकर समस्त प्रहरी परिवार गौरवान्वित है, प्रसन्न है, खुशी से अभिभूत है। और अब महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल डॉक्टर SL1000 IPS माननीय मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में एक बाल वृक्ष यानी सैपलिंग भेंट करेंगे। यह नन्हा बाल वृक्ष प्रतीक है समृद्धि का, खुशहाली का, ज्ञान का और विकास का। और अब महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल डॉक्टर SL1000 IPS द्वारा स्वागत संबोधन। डॉक्टर SL1000 IPS DG BSF। बीसवां अलंकरण समारोह एवं रुस्तमजी स्मारक व्याख्यान के मुख्य अतिथि माननीय श्री जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशकगण, सीमा सुरक्षा बल के उपस्थित सेवानिवृत्त महानिदेशकगण, विशिष्ट अतिथिगण, साथी अधिकारीगण, सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवानों, मीडिया के साथियों, देवियों और सज्जनों, मैं माननीय उप राष्ट्रपति महोदय का अत्यंत आभारी हूं कि उन्होंने आज के कार्यक्रम में अपनी व्यस्तता के बावजूद समय निकालकर हमारे बीच पधारे हैं। मुझे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है, जो हमेशा ही सीमा सुरक्षा बल के लिए मार्गदर्शन के स्रोत रहे हैं। आज यहां आपकी उपस्थिति हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति आपके अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है और आपको अपने बीच पाकर हम सभी सीमा प्रहरी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। 20वां अलंकरण समारोह एवं रुस्तमजी स्मारक व्याख्यान सीमा सुरक्षा बल के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के साथ साथ हमारे जवानों की बहादुरी, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा को पहचान देने का भी एक अवसर है। BSF के जवान देश की सीमाओं की रक्षा
और हमारे नागरिकों के सुरक्षा के सुनिश्चित करने के लिए अनवरत प्रयास रहते हैं। सीमा सुरक्षा बल समृद्ध विरासत वाला एक गौरवशाली सीमा रक्षक बल है, जो 5 दशकों से अधिक समय से भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहा है। वर्षों से इस बल ने कई चुनौतियों का सामना करते हुए अटूट साहस, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन किया है। आज सीमा सुरक्षा बल दुनिया के सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है और अपने देश की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने में हमेशा अग्रणी रहा है। इस अवसर पर मैं बल के स्थापना से लेकर आज तक उन सभी 1958 अमर प्रहरियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान दिया है। हमारे जवानों ने अवैध घुसपैठ, आतंकवाद, तस्करी और अवैध गतिविधियों सहित कई चुनौतियों का सामना किया है और हमेशा विजयी हुई है। आज का अलंकरण समारोह हमारे उन बहादुर तथा कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों और जवानों को पहचानने और अभिनंदन करने का एक अवसर है, जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ये पदक उनको राष्ट्र की सेवा के लिए उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। रुस्तमजी स्मारक व्याख्यान आज के समारोह के एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह व्याख्यान सीमा सुरक्षा बल के प्रथम महानिदेशक स्वर्गीय के.एफ. रुस्तमजी की स्मृति में आयोजित किया जाता है, जिन्होंने बल के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। व्याख्यान सीमाओं के सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और बल के सामने आने वाले चुनौतियों को उजागर करने का एक शुभ अवसर है। सीमाओं की सुरक्षा एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है, जिसके लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सीमा सुरक्षा बल हमेशा से देश की सीमाओं की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने में सबसे आगे रहा है और हम आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सीमावर्ती नागरिकों के बीच सद्भावना बनाने के उद्देश्य से सीमा सुरक्षा बल ने कई पहल की है, जिसमें चिकित्सा शिविर, शैक्षिक कार्यक्रम, खेलकूद इत्यादि का आयोजन शामिल है। हमारा मानना है कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सीमावर्ती नागरिकों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना आवश्यक है। सीमा सुरक्षा बल अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी एवं मॉडर्नाइजेशन को अपनाने में भी सबसे आगे रहा है। सीमा सुरक्षा बल समय के साथ बदलती चुनौतियों के अनुसार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपनी ऑपरेशनल क्षमताओं को निरंतर बढ़ा रहा है। इसी का परिणाम है कि पिछले 1 साल में हमने पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं में बहुत बड़ी संख्या में आपराधिक एवं असामाजिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में कॉन्ट्रबैंड आइटम्स भी जब्त किए हैं। ड्रोन को लेकर हमेशा से हमारे प्रोएक्टिव पॉलिसी रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहादुर सीमा प्रहरी ने विगत 1 वर्ष में 33 ड्रोन को गिराकर भारी मात्रा में हथियार एवं मादक पदार्थ जब्त किए हैं। इस अवसर पर मैं अपने सीमा प्रहरियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ सेवा की है। मैं अपने प्रहरियों के परिवारों को भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने उनके ड्यूटी के दौरान उनके साथ दिया है। महोदय, आज के इस अलंकरण समारोह में 2 वीर सीमा प्रहरी को बहादुरी के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही हमारे 33 सीमा प्रहरियों को और सेवानिवृत्त कर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है। मैं एक बार पुनः श्री जगदीप धनखर, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बीएसएफ। सीमा सुरक्षा बल ने
महिला शक्ति को और अधिक सशक्त करने तथा हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी को महत्व देते हुए राष्ट्र को एक नया संदेश दिया है। आज बल की महिला शक्ति जीवन के हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अदा करते हुए इतिहास रच रही है। आइए अब एक लघु वृत्त चित्र के माध्यम से देखते हैं सीमा सुरक्षा बल की महिला शक्ति की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ जीवन के हर पहलू में अहम भागीदारी को प्रदर्शित करती एक लघु फिल्म जिसका नाम है सीमा पर है सीमा भवानी। सीमा पर है सीमा भवानी। ये शौर्य गाथा है भारत के उन वीर बालाओं की जो राष्ट्र रक्षा में खुद को समर्पित कर मां भारती की सेवा में सदैव तत्पर रहते हुए भारत की सीमाओं पर सीमा भवानी बनकर तैयार, जिन्हें देख काल में घबराए सीमा पार दुश्मन भी दहशत से कांप जाए। राष्ट्र के सशक्तिकरण का परिचय पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इतिहास रचती ये महिलाएं हमारे देश की गौरव है। सीमा सुरक्षा बल में वैसे तो महिलाएं बल के स्थापना के कुछ ही दिनों के बाद से विभिन्न गैर लड़ाकू जिम्मेदारियों का बेहतरीन निर्वहन कर रही है, परंतु सन 2008 का वो ऐतिहासिक क्षण था जब सीमा सुरक्षा बल में महिलाओं को लड़ाकू रोल में भी भर्ती किया जाने लगा और आज हमारे पास 7,000 से भी ज्यादा महिलाएं विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन गौरव के साथ कर रही है। आज हमारी महिला प्रहरियों की तैनाती कश्मीर की बर्फीली चोटियों से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान तक, वो सीमाओं पर सुंदरबन की भूल भुलैया से लेकर गुजरात के रण तक मुस्तैदी से तैनात है। आज सीमा सुरक्षा बल की शायद ही कोई ऐसी जिम्मेदारी हो जिसे हमारी महिला प्रहरी नहीं निभाती। इन सभी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए महिला प्रहरियों को कई कठिन और मुश्किल प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। सीमा सुरक्षा बल में भर्ती के साथ ही शुरू होता है इनका बुनियादी प्रशिक्षण और उसके बाद कई प्रकार के विशेष प्रशिक्षण जो लगातार समय के साथ इन्हें व्यावसायिक निपुणता और जरूरी कौशल प्रदान करते हैं। कड़ी मेहनत और मुश्किल हालातों से लड़ने के लिए जज्बे ने इन्हें किसी से कमतर नहीं होने दिया और ये सतत कई चुनौतियों को पार करते हुए इतिहास बना दिया। ऐसा ही एक और ऐतिहासिक क्षण सन 2016 में आया जब सिर्फ महिला प्रहरियों के एक मोटरसाइकिल सवार दस्ते की स्थापना की, जिसे दुनिया आज सीमा भवानी मोटरसाइकिल टीम के नाम से जानती है। इसी टीम ने सन 2018 और 2022 के गणतंत्र दिवस के परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर हैरत अंगेज स्टंट दिखाकर समारोह के मुख्य अतिथि सहित उपस्थित जन सैलाब को मंत्रमुग्ध किया। सन 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 5,300 किलोमीटर की सौर एक्सप्लोरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। विश्व प्रसिद्ध अटारी बाघा रिट्रीट समारोह में भी हमारी महिला प्रहरियों ने अपनी भागीदारी से एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। ये महिला प्रहरी जब इस बेहतरीन परेड में कदम ताल करती है तो वहां उपस्थित दर्शकों को रोमांचित करते हुए भारत की सशक्त महिलाओं के बुलंद हौसलों को गुंजायमान करती है। इस परेड में महिला प्रहरियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला बोल्ड ड्रिल भी अद्भुत आकर्षण का केंद्र होता है। सन 2023 के गणतंत्र दिवस के परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर इन महिलाओं ने इतिहास रचते हुए पहली बार पुरुष सीमा प्रहरियों के साथ प्रसिद्ध ऊंट सवार दस्ते का हिस्सा बनी। सजे धजे ऊंटों पर सवार ये महिला ऊंट सवार दस्ता दर्शकों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र है। इसके अतिरिक्त आज सीमा सुरक्षा बल में महिला प्रहरी
विभिन्न प्रकार के खेल स्पर्धाओं सहित योग और प्रदर्शन में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पल और देश को गौरवान्वित करते हैं। जो डरे नहीं बाधाओं से, जो डिगे नहीं मुश्किल राहों से, प्रतिपल जो गुंजित है राष्ट्र की वीर गाथाओं से, नमन करे उस शक्ति को जो बन सीमा पर सीमा भवानी है, सीमा भवानी है। सीमा सुरक्षा बल में नारी शक्ति के इस सक्षम व सशक्त स्वरूप को देख हृदय गर्व से रोमांचित हो उठा। और अब हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय से पदक अलंकरण को प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हैं। डीजीबीएसएफ डॉक्टर SL1000 IPS से निवेदन है कि वे मुख्य अतिथि महोदय की अगवानी करें। पदक अलंकरण की श्रृंखला में सर्वप्रथम पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री कांस्टेबल आनंद उरांव 20 अगस्त सन 2019 भारत बांग्लादेश सीमा की सीमा चौकी गोरवधा ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल आनंद उरांव ने भारी मात्रा में तस्करी का सामान लिए आगे बढ़ते असामाजिक तत्वों को देख जैसे ही ललकारा कि उन असामाजिक तत्वों ने अचानक हमला कर कांस्टेबल आनंद को जख्मी कर दिया, परंतु अपने जख्मों की परवाह किए बगैर इस बहादुर प्रहरी ने डटकर मुकाबला किया और उन असामाजिक तत्वों के मंसूबों को नाकाम करते हुए उन्हें खदेड़ने में कामयाब रहे। अपनी जान पर खेलकर राष्ट्रहित सुनिश्चित करने वाले बहादुर प्रहरी आनंद उरांव को अनुपम शौर्य, पराक्रम, सामरिक दक्षता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए वीरता के पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है। कांस्टेबल आनंद उरांव। हेड कांस्टेबल सुंदर सिंह 29 जनवरी सन 2021 सीमा प्रहरी सुंदर सिंह ने भारत बांग्लादेश सीमा की ओर बढ़ते कुछ संदिग्ध लोगों को देख जैसे ही ललकारा कि उन आपराधिक तत्वों ने प्राणघातक मंशा के साथ सुंदर सिंह को घेर लिया, परंतु साहस की अद्भुत मिसाल कायम करते हुए बहादुर प्रहरी सुंदर सिंह ने डटकर मुकाबला किया, जिस दौरान वो जख्मी हो गए। घायल होने के बावजूद इस बहादुर प्रहरी ने संघर्ष जारी रखा और अपने पराक्रम से उन आपराधिक तत्वों को भागने पर मजबूर कर दिया और उनमें से एक को सुंदर सिंह ने अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते हुए धर दबोचा। इस बहादुर प्रहरी के साहस की बदौलत सीमा पार के एक असामाजिक तत्व सहित भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामान भी जब्त किया जा सका। बहादुर प्रहरी सुंदर सिंह के अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। हेड कांस्टेबल सुंदर सिंह। और अब सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक, एक अलंकरण उन कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों व सीमा प्रहरियों के लिए जो अब तक के अपने कार्यकाल में अपने प्रशंसनीय कार्यों के लिए अनेकों बार सम्मानित होते रहे हैं और आज इनकी लंबी प्रशंसनीय व सराहनीय सेवा के सम्मान में पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से नवाजा जा रहा है। इस सम्मानपूर्ण पदक को प्राप्त करने सबसे पहले आ रहे हैं श्री संदीप चानन, DIG।
श्री कमलजीत सिंह, डीआईजी। इससे पूर्व श्री कमलजीत सिंह यूएन मिशन के दौरान शांति बहाली के क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय कार्य के लिए यूएन पीस कीपिंग मेडल से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। श्री संजय कुमार, कमांडेंट। श्री दिवाकर कुमार, कमांडेंट। इससे पूर्व श्री दिवाकर को प्रधानमंत्री के जीवन रक्षा पदक तथा यूएन मिशन के दौरान उल्लेखनीय कार्यों के लिए यूएन पीस कीपिंग मेडल से भी अलंकृत किया जा चुका है। श्री वीरेंद्र पाल सिंह, कमांडेंट। श्री विपिन कुमार यादव, कमांडेंट। श्री विपिन कुमार आतंकवाद के विरुद्ध अपने साहसिक कार्यों के लिए पराक्रम पदक से भी अलंकृत हो चुके हैं। श्री राजेश कुमार यादव, कमांडेंट। श्री संजीव कुमार, कमांडेंट। श्री संजीव यूएन मिशन के दौरान अपने प्रशंसनीय कार्यों के लिए यूएन पीस कीपिंग मेडल से विभूषित हैं। श्री वरुणेंद्र प्रताप सिंह, सेकंड इन कमांड। श्री वरुणेंद्र को यूएन मिशन के दौरान सराहनीय कार्यों के लिए यूएन पीस कीपिंग मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। श्री वरिंदर कुमार, सेकंड इन कमांड, इलेक्ट्रिकल। श्री शिव कुमार शर्मा, डिप्टी कमांडेंट। श्री यतेंद्र सिंह नागर, डिप्टी कमांडेंट।
Shri Anil Kumar Srivastava, Deputy Commandant. Shri Jitendra Singh Khatak, Deputy Commandant, PPS. Shri Yashpal Singh Chauhan, Deputy Commandant. Shri Chandradeep Rai, Assistant Commandant Works. Inspector Communication Ajit Singh. Sub-Inspector S. Nand Kumar. Sub-Inspector Radio Operator Karthik Chandra Roy. Sub-Inspector Rajender Singh. Sub-Inspector Vikram Singh. Assistant Sub-Inspector Radio Operator Cheti Lal Mishra. Assistant Sub-Inspector Krishan Lal.
Assistant Sub Inspector Narendra Singh. Assistant Sub Inspector Dilip Kumar Vishwas. Assistant Sub Inspector Avtar Singh. Constable Makan Singh. Constable Washerman Ram Jinish Betha. Constable Water Carrier Naresh Prasad Singh. और अब सेवानिवृत्त अधिकारियों व सीमा प्रहरियों में सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक प्राप्त करने सबसे पहले आ रही हैं श्रीमती मर्सी थॉमस डेनियल, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, रिटायर्ड। श्री बलजीत सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट मिनिस्टीरियल, रिटायर्ड। इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन, रिटायर्ड, राम अवतार। और सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड रमेश शर्मा।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान सहित अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्रीयुत जगदीप धनखड़ जी, माननीय उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य। Very warm greetings to everyone. I have no hesitation in indicating, and it is subject to medical assessment, I stand surcharged, energized, motivated, and inspired when I greeted these heroes. Each one of them reflected sublime commitment and nationalism, which we all need to emulate. Dr. S.L. Thausen, DG BSF, Sri P.V. Ramasastri, ADG BSF, and I find in the audience very distinguished people. But I find that there is a category of retired DGPs. They are not tired. None of them is tired. And this is out of personal experience. I have seen many of them. Some of them, even before I took oath of office of Governor, State of West Bengal, on 30th of July 2019, earlier to that, and thereafter also. We'll have to find out what is that so very special in the BSF that DGPs never get tired. I'll come to that later on. I recognize, and pardon me if I make an omission, I'm bound to make. Sri Pankaj Singh, Deputy NSA, had the good fortune of being side by side with him while he was heading the BSF in the state of West Bengal and thereafter at the central level. Sri Vikram Misriji, I do not know him personally, but I know enough of him, and I greatly admire him. Lieutenant General M.V. Sachinand Kumar, Vice Chief of Army Staff. Sir, my salutations as Sainik School 166, Sainik School, Chittorgarh. Sri Anish Dayal Singh, DG ITBP. Shri Shir Vardhan Singh, DG CISF, Shri Atul Karwal, DG NDRF, Shri Arvind Kumar, Vigilante Commissioner, former Director IB, and one with whom I interacted on every aspect and several times, Shri Rajiv Jain. And for a long time. Distinguished officers, everyone present in the audience, and the entire human resource of BSF, their families, the veterans, ladies and gentlemen. I'm extremely happy and delighted to be associated
with the 20th investiture ceremony of brave men and one woman. When I say one woman, I go back to what Disraeli, a Prime Minister of Israel, once said. The only man in my cabinet is a woman. He was making a reference to Golda Meir. How thoughtful of the BSF to have that film. The film is a ground reality. The film focused on the growth of our woman power, their contributions, and it exemplifies incremental fruits of Beti Padhao. And I would say Beti Padhao gives rise to blossoming of democracy, growth of economy, and balance of societal behavior. Those who exemplify their work by such conduct have to be ever respected and well regarded. The investiture ceremony is a momentous occasion to recognize valor, honor, and exceptional contributions. When I interacted with each of them, they are drawn from all over the country. One of them was from Sainik School. Instant connect with me. Congratulations to them, their parents, their families. They have made all of them very proud. To honor deserving individuals engaged in public service is our obligation, and we should be discharging it as often as possible. राष्ट्र के परीरों को मेरा नमन, थार का तपता मरुस्थल हो, and imagine the conditions there. कच्छ के रण का दलदल हो, I have been there. कश्मीर की बर्फीली चोटियां हो, and those चोटियां at the moment are seeing global warmth, presence of global dignitaries, a changing profile of this country, and the world is looking at the big change that is taking place. या फिर पूर्वोत्तर भारत के घने जंगल, इन सब परिस्थितियों में, in extremely trying conditions of weather and challenges of all kind, one category is functional 24/7, and that is our BSF. आज मैं बल के सभी बहादुर जवानों को उनकी राष्ट्र सेवा और समर्पण के लिए नमन करता हूं। भारत को सीमा सुरक्षा बल पर नाज है। But what is more important, the credit goes to their families. They are the spinal strength. They sustain their morale. We must always be in ever salutation of these families who contribute human resource to BSF that allows us to have sound sleep. Honored to be with those who are associated as guardians of our frontiers. And look at their motto. The motto says it all. जीवन पर्यंत कर्तव्य है। इस वाक्य को बीएसएफ के हर व्यक्ति ने हर परिस्थिति में, हर विषम परिस्थिति में, हर कठिन परिस्थिति में और सब कुछ निछावर करने के बाद भी चरितार्थ किया है। मैं उनको नमन करता हूं। I salute their passion, commitment, devotion to duty in realizing their mission, which is ultimate essence of our nationalism. Raised under the charismatic leadership of Sri K.F. Rustamji,
BSF has now evolved into a modern, disciplined, and capable force. It is an honor for me to deliver Rustamji Memorial Lecture 2023. I belong to legal profession, which means I was in the company of jealous mistress. A legal profession is known. The jealous mistress came to an end when I became Governor State of West Bengal. But then that gene is always there. So when I look at Rustamji, what a change he catalyzed in the world of law. Such historic, memorable milestones generated by that great person is one of the most significant. Soothing moment was protection of human rights. After he had structured many organizations, this he focused. The man who set up the Border Security Force, he also laid the firm foundations, very firm, and the foundations have now culminated, crystallized into badi imarat, public interest litigation. It was he who initiated public interest litigation in the Indian judicial system. The National Police Commission, this was the first of its kind. The need for National Police Commission was felt because the largest democracy on the earth was visited in 1975 with the dark era of emergency. That saw large-scale human rights violations, debacle of institutions, something which founding fathers of the Constitution never imagined, a period which we all would like to forget. Large number of people were put behind the bars. They had no access to judiciary. So when there was turn of events politically, National Police Commission came into being. And this National Police Commission had an important component, and that was in the shape of Rustamji. He was one of its glorious members. It came to be headed by a gentleman whom I remembered every moment I was Governor State of West Bengal, because Dharamviraji adorned that august office as Governor State of West Bengal. I could never rise to his level of commitment and dedication. But in together, these gentlemen created National Police Commission, which we greatly value. In that capacity, in 1978, Rustamji visited jails in Bihar, and he scripted their conditions. He was greatly moved, and he thought he would have to catalyze affirmative actions, because he came together that many of the prisoners were there in jails for a period which was much beyond the maximum punishment which could be accorded to them. And this led to Usandara Khatu versus State of Bihar. And ladies and gentlemen, one amongst you, founder of BSF, brought about human rights by one stroke to 40,000 under trials all over the country. What a feat attained by one individual. The moral of the story is that if an individual commits himself or herself to achieve something which is of wider impact for the society, it is attainable. I have always indicated the most dangerous human activity is to have a great idea
and allow that idea to be harbored in your mind. That's the greatest injustice we do to humanity. If there is an idea, we need to act on it, irrespective of the result. Let us not have the fear of failure of that idea. No one has succeeded in the first instance. If there was no flight of imagination, ladies and gentlemen, Neil Armstrong would not have landed on moon. Things would have been very different. So never hesitated. Rustamji exemplified it in action. At that point of time, now we have social media. Now we have proactive judiciary. We are proud of it. Our judiciary is spinally so strong that confidence of the citizen is so high. But at that time, this mechanism was not there. He initiated it. I'll quote his reflections. He reflected, I quote, "How can such a situation exist in our country? We must do something about it," unquote. This was the idea. If he had kept quiet, there would have been quietus to the situation, and those people would have been languishing in jail. He acted. He tried and succeeded. I go a step further. Never hesitate to try. A failure is only a step that someone else will take up the baton. A passionate nationalist, Rustamji wrote extensively on minority rights of Hindus at that point of time, and Muslims, and viewed the fact that his journalistic writings were not acknowledged. You all are gifted more than I am. You know, sometimes recognition to a person comes when he has met his maker. So it is recorded in history. Every word which Rustamji said reverberates in our ears now, sensitizes our mind and attitude. He was chief of Madhya Pradesh Police, as I said, DG BSF, and was the first chief security officer of Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, and for a long time of 6 years. Maintaining a diary is a tough challenge. It has given rise to so many cases, and those, they are not present here. Income tax people are extremely keen to get a diary. If they get one, they think it is a epicenter. Rustamji also maintained a diary, and he continued maintaining it for more than 3 decades. I am sure whatever is in public domain, you will focus on that. The man who was handpicked by none else than Lal Bahadur Shastri, who said, "Jai Jawan, Jai Kisan," has created a force of which Bharat is proud and the world is aware. Rustamji, his exceptional qualities were reflected during 1971 Bangladesh Liberation War. He retired in 1974. As I said, was never tired, as I see everyone around here. A special secretary in the Ministry of Home Affairs. He structured the Indo-Tibetan Border Police, CISF, in the Central Police Organization. He initiated formation of the Indian Coast Guard. And what a magnificent organization is Coast Guard. Eastern part of the country is more prone to getting cyclones of very high intensity. And when I was governor of the state of West Bengal, we had about half a dozen.
I salute to the Indian Coast Guard. There was not a single death on the high seas during that period. That organization was created by the men. Conferment of the second highest civilian award came to him a little late, Padma Vibhushan, but it did come in 1991. I recollect my time then as a member of parliament and a union minister from 89 to 91. A befitting recognition and a rich tribute, well-earned tribute to his sublime service to the nation. He was born a Parsi on May 22, 1916, but as per his wish, he was cremated according to his wishes as per Hindu rituals in March 2003. He will always remain etched in our memories as a great leader, manager, strategist, writer, thinker, a police officer, and a humanist. Ladies and gentlemen, BSF saga does not end there. There is another gentleman, very vibrant, was your DGP, and he has taken the baton, and I would say to a higher level. This distinguished former DGP is passionately taking Rustamji's baton and torch to higher flights. I am making reference to none else than Sri Prakash Singh, a former BSF DG. Look at the commitment of the man, his passion, his mission, his devotion. He is working to transform the police mechanism, to bring about police reforms. It was after 10 years he started the process on the judicial side in 1996. 10 years thereafter, in 2006, we had another significant judgment from the Supreme Court. The one we had was initiated by Rustamji. This one was in 2006, when a foundation was given to those in governance how to allow police to function and to be in service of the nation in the best traditions. Such people are to be honored. They have to be saluted. I can betray my mind to you that as Governor State of West Bengal, when I had not known Prakash Singh ji, I sent a word to him that governance is posing a challenge. And if the challenge emanates from the steel frame, if the challenge emanates from those in uniform, I need your guidance. He penned down a note which was so remarkable. And you will be happy to know, ladies and gentlemen, for the first time in the state of West Bengal, DGP came to be appointed as per Supreme Court verdict. The man initiated it. Several things have happened in the country because of 2006 judgment and the orders passed thereafter. Sovereignty and integrity of our country is inviolable. We all are committed to it. There could be no thought of ever compromising it. And we know it. The challenges which the BSF faces. The borders are porous. The borders are long. Unauthorized, illegal economic activity which, to those who do not believe in the nation, engage into sinister and pernicious activities, is financially rewarding. It's a tough challenge for the BSF to antidote those activities, neutralize them, combat them, contain them. And sometimes the challenges are not from the other side of the border.
Sometimes the challenges are from this side of the border. I am so happy to share with you that BSF in the state of West Bengal, one of the gentlemen is present here, took to non-invasive, cooperative, harmonious approach, generating an ecosystem so that people participate. The activities of BSF for suffering Indians in crisis is too well known. Insurgency, Naxalism, they are being combated with the greater involvement of BSF. And for the country, if we take it on a point of record, what's largest border guarding force? India's first line of defense. National security is the cornerstone of our country's progress and prosperity. You know it more than I do of late. The developments that should have taken place earlier are taking place now. The kind of road infrastructure we have, the kind of technological involvement that is taking place, the kind of arms that our people are being made available, and the kind of facilities that are being created for the human resource. This is not an obligation to them. This is our due. It is satisfying and gratifying to note that the attention is being paid by the governance mechanism very seriously. सीमा सुरक्षा के साथ बीएसएफ के लोग नक्सलवाद, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को जब मिटाते हैं, पर्सन से काम करते हैं, उनके परिवार के ऊपर बहुत बीतती है. But they don't lament. They take that they are working for the nation. ऐसी परिस्थिति में उनके हर परिजन को मैं सैल्यूट करता हूं. हमें उन पर नाज है. चैलेंजेस कितने आ रहे हैं? स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और इसमें तो ह्यूमन के साथ साथ हमारी गाय माता को भी ले रखा है. कितनी बड़ी चुनौती है. मिस्टर पंकज सिंह विल रिवील समडे इन अ बुक कि कितने तरीके एडॉप्ट किए जाते हैं. दिमाग खतरनाक रूप से कहां तक जा सकता है, मैंने भी देखा है. बीएसएफ एंटीडोट करती है. I only wish that we have more rewarding ecosystem for them. I appeal to all state governments, particularly border states, to be extremely sympathetic, sensitive to border security force. They must take border security force in precedence to their own. The leadership of the border security force, and I can say without fear of contradiction out of experience, will never generate a system other than that of being in collaboration with the state governments. I appeal from this platform, executive leadership of all state governments, to take all affirmative steps, sensitize their mechanism, so that morale of the BSF is ever sustained high. The length, porosity, and complexity of border makes patrolling very difficult. I have seen in the film, this is being done by our girls also, excellently. But it's very difficult. Sophisticated mechanisms are being employed both sides. We have to be extremely careful. But I am happy. I will not reflect on the attainments of the BSF on these things by intercepting these aspects which are used as fiscal gain mechanisms
is remarkable. On a point in 2022, BSF seized 300 kilograms of heroin, over 10,000 firearms, and cattle in thousands. I know the problem they face. They seize, they expect to be rewarded, their problem starts. From that point of time, someone has to take care of the cattle. Surely BSF seizes them, can't take care of the cattle all the time. I work very hard in that capacity to generate a mechanism. Others are working. The challenges that BSF faces, its efficiency will go up if citizens take it upon themselves to be an extension of BSF, to be supportive of BSF. Ladies and gentlemen, we are at a time in our country, in Amritkal, when India is on the rise as never before. The rise is unstoppable. The incremental growth trajectory will ever go high. By the time we reach 2047, Bharat will be a global leader. Just a decade ago, we were 11th largest global economy in the world. In September 2022, we had the distinction of being the 5th largest global economy. And overtaking our erstwhile colonial rulers. By turn of the decade, we will be 3rd largest. If I focus on contemporaneous economic scenario, in 2022, our digital transfers were more than US, UK, France and Germany by 4 times. 4 times. This is because our borders are secure. All this will go on a tangent if borders are not secure. If we see the 700 million internet users we have, our data consumption is more than China and US per capita, China and USA taken together. It's a silent revolution. और ये क्यों संभव है? इसका एक प्रमुख कारण है, जो सीमा पर कठिन परिस्थिति में प्राणपण से देश की सेवा करते हैं 24/7, उनसे कोई चूक होगी, ये गड़बड़ा सकता है। तो इनकी एक्टिविटी आप लोगों की is much beyond security. Security is integrated, intertwined in economic development, peace and harmony. And therefore, you are really engaged by your unwavering commitment, self-service and sacrifice in taking care of the holistic growth of the nation. I would leave a thought with all of you, because you are practicing it. You are practicing it day in and day out. You always keep nation first. Your personal interest always takes a backseat. This is not enough. Others must also magnetically learn from you. Make them aware of it, that if we are caring for the nation, we are caring for you, and therefore you must be upright in your commitment to the nation. भारत माता की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बीएसएफ के सभी जवान अधिकारियों को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
मेरी संवेदनाएं उन शहीदों के परिजनों के साथ हैं। I can tell you, as governor, I visited every household that lost a BSF warrior. Me and my wife both went there. I want every senior official, senior constitutional functionary to make it a practice. It is not solace to a family. It is solace to a category that is helping us survive the way we are. मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। I am grateful to DG BSF for affording me this rare, meaningful opportunity. I will ever cherish these moments. Jai Hind. महोदय, आपके प्यार, आशीर्वाद एवं प्रशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में स्मृति चिन्ह भेंट करने का। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल डॉक्टर SL1000 IPS समस्त सीमा प्रहरियों की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। स्मृति चिन्ह प्रतीक है स्नेह का, सम्मान का, अवलंबन है स्मृतियों का, यादों का। और अब हम सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान के इस वर्ष की श्रृंखला के समापन की दहलीज पर हैं। अब आइए एक बार फिर हम सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय मेडल अवार्डीज के साथ फोटो सेशन के उपरांत जलपान में शामिल होने हेतु पधार रहे हैं। DG BSF डॉक्टर SL1000 IPS मुख्य अतिथि महोदय की अगवानी करते हुए